Assalamu alaikum students, welcome to our today's video class. Today we will be discussing the character sketch of Grasm, जो कि बहुत ही important question है और अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ग्रासम जो है ये एक रशियन रूलर बट पीसेंट फैमिली को बिलोंग करता था और बट ही हैज अ वेरी हम्बल कैरेक्टर. हिज ह्यूमिलिटी was reflected all through the story. He is the kind, loving and simple-hearted but hard-working person. He is self-sacrificing and a man of few words. He fails to get any job in Moscow. His friends begin to avoid him, but he never says a word against anyone. He comes to know how wicked Yegor, his friend, was, yet he says nothing when Yegor calls him an idiot. At the end of the story, we come to know that what a good heart he has. He overhears the conversation between the old couple. He realizes what misfortune he would be bringing for the old couple if he joined the job snatched by Yegor. It made him sick at heart. He comes back to Yegor. He thanks him for all the troubles he has taken for him, but says, "I don't want the place. I will look for another one for myself." Truly, Grasm had a heart of gold. वो एक सिंपल बट हार्ड वर्किंग पीजेंट लड़का होता है और क्योंकि वो मॉस्को में अपनी पहले जॉब खो चुका होता है और वापस जॉब तलाश करने की कोशिश में उसे कहीं रोज तक भूखा रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है उसके, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसको छोड़ के चले जाते हैं. बट ही नेवर बॉदर्ड अबाउट द things he was facing. Once he met one of his native villager, namely Yegor. वो सारा उसको नरेट करता है अपनी स्टोरी और यगार उसको जॉब देने के लिए अपनी ऑयली टंग का, अपनी अपने विकेड नेचर का यूज करता है और एक ओल्ड कपल को जॉब से हटा देता है. तो जब ग्रासम को इस बारे में पता चलता है तो वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता है अपनी जॉब की और वो उस जॉब को छोड़ देता है विदाउट सेइंग एनी वर्ड टू हिज फ्रेंड. वो उसको थैंक्स कह के कि उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया उसको जॉब दिलाने में, वहां से चला जाता है. तो दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस शॉर्ट स्टोरी के आप मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी बताएं. तो इसमें कहीं छोटे बड़े थीम्स जुड़े हुए हैं. वन ऑफ मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी इज द सर्वेंट इज दैट selfishness hardens our soul and makes it blind to the difference between good and bad. जब हम सेल्फिश होते हैं किसी चीज को लेके, किसी एम को लेके, किसी पर्पस को लेके, तो हम इतने ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, इतने ज्यादा क्रूअल हो जाते हैं कि हमें अच्छे और बुरे में फर्क करना भूल जाता है. और जो ये सेल्फिश पर्सन होता है डजंट माइंड यूजिंग इवन अनफेयर मीन्स टू अचीव हिज एंड्स. अपने एंड्स को हासिल करने के लिए, अपने एम को फुलफिल करने के लिए वो बिल्कुल भी मीन नहीं करता है. वो कोई भी अनफेयर रास्ता अपनाता है. और दूसरी तरह से अ कॉन्शियस पर्सन नेवर यूजेस unfair means for any purpose. For him, ends never justify the means. Only fair means can justify a good end. The writer has brought out the theme through a contrast between the characters of Grasm and the coachman Yegor. मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक ही क्लास को बिलोंग करने वाले, पीजेंट क्लास को बिलोंग करने वाले दो बॉयज का कैसे डिफरेंट कैरेक्टर हैं और कैसे एक अपने एंड को हासिल करने के लिए, अपने गोल्स को हासिल करने के लिए कोई भी अनफेयर मीन यूज करता है और दूसरी तरफ से कैसे एक हार्ड वर्किंग, एक लविंग कैरेक्टर, एक केयरिंग नेचर का लड़का, ऑल्दो सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट और हंगर, तो वो किस तरह से अनफेयर मीन्स को अवॉइड करके फेयर मीन्स की तरह अपने जॉब को हासिल करने की कोशिश करता है. यगोर जो है, नो डाउट, बेशक द कोचमैन हेल्प्स ग्रासम टू गेट अ जॉब विथ हिज मास्टर, बट ऑल हिज एक्शंस शो मोर ऑफ हिज कनिंग
then helpfulness, cunningness, then helpfulness, and the contrast between the two becomes very clear at the end of the story when Grayson overhears the old couple's conversation and refuses to take their place. Yegor flies into a rage and calls him an idiot. We see a devil in one and an angel in other, although belonging the same village, almost the same age group and same peasant class. तो और एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें, हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी ऑफ ग्रैजम. ये जो स्टोरी है इसमें कैसे हमें ग्रैजम की ह्यूमिलिटी झलकती है. तो Grasham's humility is reflected all through the story. He fails to get any job in Moscow. His friends begin to avoid him, but he never says a word against anyone. He comes to Yegor, who is from his own village. The man is a coachman with a rich merchant. He starts boasting of his honesty and faithfulness towards his master. He says that his master would gladly take him back if ever he had to leave him. Just he indirectly blames Grasham because his previous master has refused to take him back. Grasham listens to all this with downcast eyes. और ग्रैजम जो है वो उसकी इन सारी बातों को, इन सारे तानों के, इन सारे टॉन्ट्स को आंख झुका के बड़ी नरमी से सुनता है. दिस शोज हिज ह्यूमिलिटी. His humility shows itself at the end of the story. Also, he comes to know how wicked Yegor is, yet he says nothing when Yegor calls him an idiot. Truly, Grasham is a very humble young man. Thank you. This was all about the short story, The Servant. Inshallah, tomorrow we will be discussing a lesson from your prose section. Till then, you keep studying and stay safe. Thank you. Have a nice time.